Chalo, good evening, all of you. Let us continue the superposition of waves, which was already started last time. तो उसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा था, तो वेव के कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स है तो वो हमने देखे थे। वेव का इक्वेशन किस तरह से होता है और फेज डिफरेंस किस तरह से निकाला जा सकता है और इनिशियल फेज के हिसाब से किस तरह से वेव इनिशियल पार्टिकल किस तरह से स्टार्ट करता है अलग अलग पॉइंट से, तो वो सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। Yes, now we'll start with the concept of the interference. Okay, interference, which is the most important concept in this chapter. Actually, देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको जैसा कि स्टार्टिंग में भी बताया था कि when we talk about the superposition, then there are three types of superposition. When the waves are considered, we can see that सुपरपोजिशन, चलो सुपरपोजिशन तो चलो सुपरपोजिशन है, बट उसके अंदर हमको जो कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो तीन अलग अलग पार्ट स्टडी करने हैं इसके अंदर। सबसे पहले आता है इंटरफेरेंस, ठीक है, व्हेन द टू वेव्स मीट ईच अदर देन गेट द इंटरफेरेंस। दूसरा आता है फिनोमेना ऑफ बीट्स, ओके, और तीसरा जो आता है तो वो है स्टेशनरी वेव्स, ओके, स्टेशनरी वेव्स। अभी इन तीनों के बीच में अगर कंसेप्चुअल डिफरेंस अगर देखेंगे ठीक से तो यही है कि when interference takes place, it is required that the two waves must have the same frequency and period. तो देखो यहाँ पे ठीक से period and frequency should be the same. Obviously अगर एक सेम होगा तो दूसरा सेम ही होगा जरूर, period should be the same, okay? तो ये बात याद रखो ठीक से इंटरफेरेंस होने के लिए, बट फेज डिफरेंस कैन बी डिफरेंट। फेज जो इनिशियल फेज जो है इट कैन बी डिफरेंट, नो प्रॉब्लम, सो दैट इज कवर्ड इन दिस इंटरफेरेंस। बीट्स के लिए क्या है कि फ्रीक्वेंसीज शुड नॉट बी इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल, बट दे शुड बी नियरली इक्वल, okay? That means the frequencies of the two waves must be approximately same. That means there should be a very small difference between the frequencies, okay? Then only beats are produced, remember. And stationary waves के लिए condition क्या है? The two waves must be traveling in the opposite directions. Everything is again the same, that is period is going to be the same, wavelength is going to be the same, ठीक है, wavelength period सब same होना चाहिए, no doubt, लेकिन the velocity must be, even velocity must also be same in magnitude but not in direction. So direction अगर देखेंगे तो opposite होना चाहिए. So the two equal waves, identical waves traveling in the opposite direction produce stationary waves, remember. And two waves which are having slightly different frequencies, or we can say the two waves which are having nearly equal frequencies superpose each other, then beats is produced, okay? And when the two waves having different phase or having some phase difference arrive at a point simultaneously, then interference is produced. Should I repeat all these things again? या तीनों समझ में आए सबको ठीक से? कभी इंटरफेरेंस होता है, कभी बीट्स प्रोड्यूस होते हैं, और कब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। देखो सबसे पहला हम देखेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है? फेज शुड बी डिफरेंट, ओके? देयर शुड बी phase difference between the two waves, okay? And period must be same, wavelength obviously must be the same, then only the interference will be produced. Second thing is beats. तो beats के बारे में क्या सेम होना चाहिए? देखो ठीक से यहाँ पे beats के केस में चलो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसीज जो है वो नियरली इक्वल होने चाहिए. फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी नियरली इक्वल, एंड दैट मींस दे शुड बी स्लाइटली डिफरेंट, okay? Not very much different, but they should be slightly different. In that case we can say bits are produced. देखो ठीक से amplitude must be the same and wavelength must also be the same, but the frequencies should be slightly different. और चलो wavelength भी जरूरी नहीं है कि सेम होना, क्योंकि अगर obviously
अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट होगा तो वेवलेंथ सेम हो ही नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द सेम। तो वेलोसिटी सेम है, बाकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वेवलेंथ भी डिफरेंट है, तो इस केस में हमको बिट्स मिलते हैं यादृच्छिक से। और तीसरा जो है स्टेशनरी वेव्स, व्हेन द स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, period must be the same, wavelength must be the same, velocity must also be the same in magnitude, and amplitude obviously must also be the same, but only the directions of velocity must be opposite. Then in that case the stationary waves will be produced, remember. Okay, तो ये बात याद रखो ठीक से। Yes, now we'll just discuss one by one. तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। ओके, तो व्हेन दिस इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, नाउ वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली द इंटरफेरेंस एंड व्हाट आर द कंडीशंस। ओके, देखो ठीक से होता ऐसा है ना कि अभी मान लो कि एक वेव हमारे पास है, ठीक है, ये वेव है और वो यहाँ पे पहुंच गया। एट द सेम टाइम दूसरा भी एक वेव वहां पे पहुंच गया, सेम ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाला वेव यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अभी ये दोनों वेव्स का वेवलेंथ सेम है, ठीक है, पीरियड सेम है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। उतना तो समझ सकते हो, कांस्टेंट रहेगा। अगर फेज डिफरेंस, इसका फेज जो है, तो अगर फेज इसका फेज फेज कैसे गिनते हैं पता है ना, अगर एक वेव पूरा हो गया तो मतलब यहाँ पे 2 पाई इतना फेज हो गया, दूसरा वेव कंप्लीट हो गया मतलब 4 पाई फेज हो गया, इस पॉइंट का फेज 4 पाई है, और एक वेव कंप्लीट हो गया मतलब इस पॉइंट का फेज 6 पाई है, and so on like that. So as the waves get completed, one wave gets completed, that means there is a phase of 2 पाई। तो देखो यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो इधर से इधर तक एक 2 पाई इतना कंप्लीट फेज हो गया, इधर से इधर तक 4 पाई फेज हो गया, इधर से इधर तक 6 पाई हो गया, फिर वापस ऐसे ही करते करते हम आगे बढ़ सकते हैं 8 पाई, देन 10 पाई, देन 12 पाई, एंड देन एक्स्ट्रा, सो इट विल बी 11 पाई। करेक्ट है, ये हो गया उसका फेज। यस, इफ यू जस्ट नाउ स्टार्ट काउंटिंग द फेज ऑफ द सेकेंड वेव हियर, तो सेकेंड वेव का फेज अगर हमको काउंट करना है तो कैसे करेंगे देखो। So just count the number of waves from this point here and just multiply it by 2 pi, and that will be the phase of that wave, correct है। तो just count the waves, यहाँ से start करेंगे तो देखो ठीक से, ये एक वेव, ये फिर दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, and so on like that, 6 7 8 9 10 and 11, ठीक है। तो 11 मतलब वो 22 पाई हो गया एक्चुअली, बराबर। तो इसका फेज जो है तो वो इस तरह से हमको 22 पाई मिल रहा है, क्योंकि देखो 2 पाई अगेन 4 पाई मीन्स अगर हमने काउंट किया ठीक से तो ये इस तरह से हमको अलग अलग फेज मिलते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है ना कि दोनों वेव्स एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, लेकिन इनका फेज डिफरेंस अलग अलग है। अभी फेज डिफरेंस कितना भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट फेज डिफरेंस, समटाइम्स इट मे हैपन दैट एक वेव जो है वो यहाँ पे आके क्रस्ट, और यहाँ पे दूसरे वेव का भी क्रस्ट यहाँ पे अगर आ जाए, तो ये क्रस्ट और क्रेस्ट अगर मैच हो गया तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दैट केस द बोथ ऑफ these waves combined together will just get added together, and hence the amplitude of this resultant wave will be actually a1 plus a2 here in this way. If suppose a1 is the amplitude of the first wave, a2 is going to be the amplitude of the second wave, then we can get the resultant wave whose amplitude will be actually a1 plus a2 here. And if suppose, but in this other case, suppose that this first wave and the second wave is just out of phase like this, तो ये दोनों अगर आउट ऑफ फेज है तो यहाँ पे हमको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा,
बिल्कुल नील मिलेगा. नील मतलब, और we can also say that the result will be like this, ठीक है, which is going to be the wave which is having a very small amplitude like this. तो अगर इस तरह से हम ये देखते हैं तो इसका अगर एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड अगर a2 है, तो when the interference takes place we can get a resultant amplitude to be simply equal to a1 minus a2. ये समझ सकते हो ठीक से, याद रखो ठीक से. This will be the a1 minus a2 and this will be the destructive interference. Actually this is called as destructive interference and this is called as constructive interference. So these are the two extreme categories of interference, no doubt. But need not that is कभी भी अगर जब दो waves अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, दो waves अगर एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो या तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे या कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करे, जरूरी नहीं. They can interfere in number of ways depending upon their phase difference. Because अभी इस केस में, फर्स्ट केस में क्या है ना कि phase difference कितना हो सकता है. What is the condition for constructive interference? The two waves must have the phase difference that is delta phi to be simply equal to either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi or 8 pi and so on like that up to 2n pi. Okay, so here the constructive interference takes place between the two waves only when the two waves arrive at a point in same phase. That means this should be 2n times pi. तो 2 pi का मल्टीपल होना चाहिए ये फेज डिफरेंस जो है, ठीक है. अभी फेज डिफरेंस अगर 2 pi का मल्टीपल है, ठीक है, तो 2n pi है, तो पाथ डिफरेंस फिर कितना होगा. दो वेव्स के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस का डिफरेंस, उसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं. याद है मैंने कल आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, रिलेशनशिप लिख के दिया था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में. तो फेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 pi, सॉरी 2 pi by lambda into path difference. Correct है. So path difference is denoted by delta x. Correct. So here we can see this is the path difference. Delta x मतलब path difference और ये delta phi मतलब क्या है, phase difference. So if we have this phase difference, then path difference can be easily calculated. That is delta x is equal to lambda by 2 pi into phase difference, that is delta phi. So अगर हमने ये यूज किया तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, देखो, अगर डेल्टा फाई का वैल्यू अगर इतना है, तो वो जब हम यहाँ पे डाल देंगे डेल्टा फाई के बदले, तो यहाँ पे क्या होगा 2n पाई और नीचे 2 पाई, 2 पाई कैंसिल होके n लैम्बडा मिलेगा. सो वी कैन गेट दैट n डेल्टा x will actually be equal to n times lambda. So this is the condition on path difference for getting the constructive interference. Okay, तो दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो लैम्बडा या तो 2 लैम्बडा या तो 3 लैम्बडा या तो 4 lambda and so on up to n times lambda in this way. And what is the condition for getting this destructive interference when two waves arrive at a point? तो देखो अभी यहाँ पे ऑपोजिट फेज में होने के लिए क्या जरूरी है, अगर इस वेव का फेज मान लो कि 11 पाई है, तो इस वेव का फेज 12 पाई होना चाहिए. ठीक है, अगर 11 पाई और 12 पाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, पाई का है, तो पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ एक पॉइंट पे आ जाएगा, बराबर है. Crest and trough will just meet each other and hence there will be a destructive interference. That means there will be a cancellation of amplitude, and this happens only when the two waves have a phase difference of pi. Okay, but not only pi, even 3 pi will also give the same result, even 5 pi will also give the same result, 7 pi, 9 pi and so on up to every odd multiple of pi will give us the same result here. So that means the phase difference between the two waves arriving at a point must be 2n minus 1 into pi for getting the destructive interference here. The two waves interfere destructively only when they have a phase difference that is equal to 2n minus 1 into pi. Remember, that is odd multiple of pi, whereas here it is going to be even multiple of pi in case of constructive interference. And if we talk about the path difference, then path difference can be obtained by using the same relationship that is between this phase difference and path difference. तो path difference के बीच में और phase difference के बीच में क्या relationship है, तो ये जो phase difference का relationship है, ये phase difference का जो expression है, वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया phase difference के बदले,
तो हमको पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा, देखो इट विल बी लैम्बडा बाय 2 पाई into delta phi, that is 2n minus 1 into pi, right? So this is 2n minus 1 into pi. If we just cancel out this pi from both numerator and denominator, and if we just distribute this 2 in this inside in the bracket, then we can get this as n minus half lambda. So this is going to be the condition on path difference for getting this destructive interference. The two waves will interfere destructively only when their path difference is going to be odd multiple of lambda by 2 here. Remember, 2n minus 1 into lambda by 2. This is the odd multiple of lambda by 2. Then we can get this destructive interference. Remember, and that is, for example, if we want to get the example, then we can see the path difference should be between the two waves should be either lambda by 2 itself, or it may be 3 times of lambda by 2 actually, or it may be 5 times lambda by 2, or it may be like 7 times lambda by 2, and so on like that up to infinity, no doubt. So in this way we can get large number of values, number of different path differences, okay, so that we can get the destructive interference here between the two waves. Getting it? तो इन शॉर्ट क्या है ना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि वी शुड गेट crust incident on the trough, or trough of one wave incident on the crust of other wave. Remember, okay, but these are not only the two types. ये सिर्फ दो types constructive और destructive, सिर्फ ये दो types नहीं है interference के, बल्कि interference is a very broad concept. Whenever two waves meet with each other, भले कौन से भी पार्ट डिफरेंस के साथ हो, तो वो इंटरफेयर करते ही है, और रिजल्टेंट वेव जो बनता है उसका एम्पलीट्यूड हम निकाल सकते हैं अगर हमको दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड पता है। तो उसके लिए ये हमको यूज करना होगा। देखो, अगर सपोज एक फर्स्ट वेव का जो इक्वेशन है वो सपोज y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t है, ठीक है, और दूसरा वेव जो है उसका इक्वेशन हम मान लेते हैं y2 इज इक्वल टू a2 साइन, ये चलो ओमेगा t माइनस के एक्स होता है कि नहीं इक्वेशन, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक इक्वेशन, एक वेव का इक्वेशन है, और दूसरे वेव का जो इक्वेशन है तो वो हमको मिलता है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। What is this phi here? It is going to be the phase difference between the two waves, remember, and depending upon this phi we can find out the amplitude of resultant wave. If we just solve these two equations so as to get this a1 and a2, तो यहाँ पे a1 और a2 मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही जैसे हमने कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के अंदर किया था वही चीज हमको करना पड़ेगा, और ये सब करने के बाद हमको मिलता है रिजल्ट जो इस तरह से यहाँ पे मिलता है r, that is the resultant amplitude of the two waves will be actually obtained to be simply equal to root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi, where phi stands for the phase difference between the two waves here in this way. So this is the formula for finding the amplitude of the two waves when they arrive at a single point simultaneously, remember. And one more thing we have to understand here is that the intensity of the wave, intensity of any wave is always going to be directly proportional to the amplitude square, remember. And since the intensity of the wave is proportional to the amplitude square, we can say that the intensity of this first wave, if you want to express it in terms of I, then you can denote it by I1. So this I1 will be proportional to A1 square. In the same way here, the intensity of the second wave will actually be proportional to A2 square. And this formula can be translated in terms of intensity. If we just square on both sides, तो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर किया, इवन ये जो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है इसको हम बोलेंगे IR, इट विल एक्चुअली बी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये भी हम देख सकते हैं आराम से, जिससे हमको मिलेगा यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से R स्क्वायर which is going to be equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos alpha cos phi. Okay, here phi stands for the phase difference, remember once again, and here this R square
can be expressed in terms of the resultant intensity when the two waves are interfering with each other, and this A1 square can be replaced by I1 here, plus this A2 square can be replaced by I2, and it's 2 as it is, and A1 can be written as root of I1, and A2 can be written as root of I2 into cos of phi kept as it is. So this is the expression for the intensity of resultant amplitude, और जो रिजल्टेंट जो पॉइंट है उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना बनता है, जहां पे दो वेव्स आके मिलते हैं उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होता है याद रखो से. एंड इफ वी सी केयरफुली द नेचर ऑफ दिस फॉर्मूला enables us to consider this A1 and A2 to be two vectors. तो ये वेक्टर्स फॉर्म में इसको लिखना हम कर सकते हैं आराम से. तो इसका मतलब हम ऐसे ही कंसिडर कर सकते हैं कि resultant intensity or resultant amplitude happens to be the vector sum of the two vectors whose magnitudes are A1 and A2 which are inclined at an angle phi with each other. तो मतलब अगर दो वेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं A1 और A2 इतने मैग्नीट्यूड के, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल फाई रखते हैं, तो उस पैराग्राम का जो डायगोनल बनता है उस डायगोनल का लेंथ माना यहाँ पे कितना होगा, r के बराबर होगा जरूर. सो द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स as we find it out in case of the scalars and vectors will be obtained by this diagram. तो ये डायग्राम के अंदर जो हमको r मिलेगा और यहाँ पे इस फॉर्मूला से जो r हमको मिलेगा सेम ही होगा. ये बहुत बड़ी बात है जिसको यूज करके हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आपको याद होगा मैंने इसका एक टेबल भी बना के दिया था आपको ऑसिलेशंस के अंदर, ठीक है, अगर याद है तो देखो ठीक से, क्योंकि ऑसिलेशंस के अंदर हमने जब डिस्कस किया था व्हेन द टू वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन इन दैट केस द रिजल्टेंट एसएचएम रिजल्टेंट मोशन जो होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमको आराम से मिल जाता है अगर हमको उनके बीच में का एंगल पता है. तो अभी इसमें यहाँ पे जो है एंगल अगर हम सपोज डेल्टा फाई मान लेते हैं या फाई मान लेते हैं, चलो ठीक है, फाई इज गोइंग टू बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट, देन इन दैट केस वी कैन सी क्लियरली द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. अच्छा, उस केस में फिर ये जो है उन दोनों वेव्स के बीच में का जो डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस होता है वो भी हमको पता होना चाहिए. तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालने आता है. ठीक है, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में स्ट्रेट डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो उस केस में फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिलता है, आर का जो वैल्यू है वो कितना मिलता है वो भी हमको ढूंढ के निकालना है, और एट द सेम टाइम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना मिलता है तो वो भी हमको निकाल के दिखाना है. और ये भी दो केसेस में हमको निकालना है. एक केस ये कि जब A1 is not equal to A2, ओके, A1 जब A2 के साथ इक्वल नहीं है तो उस केस में इंटेंसिटी भी हमको निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जबकि I1 is not equal to I2. और उसके बाद नेक्स्ट टेबल में हमको यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढ के निकालना है, but in case when the amplitudes of the two waves are going to be equal, okay, and we want also to find out the resultant intensity of the when two waves meet with each other, when the when the amplitudes of these two waves are going to be equal. That means again A1 is going to be equal to A2. तो ये पूरा टेबल अगर हम लर्न करके रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल एक चुटकी से सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल. तो देखो सबसे पहला वाला हमारा जो टेबल रहेगा तो उसमें एंगल फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट अ पॉइंट विल बी 0. अभी अगेन नॉट ओनली 0 बट 0 के साथ 2 पाई 4 पाई 6 पाई करेस्पॉन्ड है ही, रिमेंबर. ओके, तो 0 जहां पे फेज डिफरेंस 0 है तो वहां पे 2 पाई भी हो सकता है 4 पाई भी हो सकता है, वो उसमें उसके अंदर ही आ गया, उसको सेपरेट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट इन द लास्ट स्क्रीन, राइट. सो हियर फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है 0 है तो पाथ डिफरेंस फिर कितना होगा, इट मस्ट बी इक्वल टू 0 अगेन, एंड नॉट ओनली 0 but it can be lambda also, or it may be lambda 2 lambda, or it may be 3 lambda, and so on up to n lambda in general. Okay, so in that case also we can use this same table, okay, same row of the table.
Okay, if suppose amplitudes are not equal, then in that case the resultant amplitude will actually become A1 plus A2, as we have already seen in the last slide, right? And resultant intensity will actually be equal to A1 plus A2 the whole square. We can see it clearly. So it will be A1 plus A2 the whole square. We can write it in this way. Just because we already accepted that its intensity is actually the square of proportional to the square of amplitude, correct है? So इसलिए फिर यहाँ पे intensity जो है resultant intensity जो है वो A1 plus A2 the whole square के साथ proportion में होगा जरूर. और फिर यहाँ पे ये जो अगर amplitude अगर equal है तो उस केस में फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड इक्वल है तो फिर उसको फिर A1 A2 बोलने की जरूरत ही नहीं है. We can call it as A only, and in that case the resultant amplitude in this case will be actually 2A simply. तो 2A के बराबर resultant amplitude आएगा. और resultant intensity कितना बनेगा? If the resultant intensity we want to find out in case when the amplitudes of both of the waves are equal. अगर दोनों waves के amplitudes equal है तो ऑब्वियसली दोनों वेव्स का इंटेंसिटी भी तो इक्वल होगा जरूर. और अगर दोनों वेव्स का इंटेंसिटी इक्वल है तो उस केस में फिर यहाँ पे I1 और इक्वल टू I2 हमको बोलना पड़ेगा. और अगर I1 I2 सेम है तो फिर उसको I1 I2 बोलने की जरूरत ही क्या है? Can't we call it as I simply? So if we suppose here I1 is going to be same as I2, but since I1 and I2 are same, we need not to call this as I1 and I2. We can call it as I only. तो सिंपली I उसको हम बोल सकते हैं. तो उस केस में यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितना मिलेगा पता है तुमको? इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में मिलेगा, जो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रहा है 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट A स्क्वायर मतलब ही क्या होता है? I होता है. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, the resultant intensity here will be 4 times of I. Check करो एक बार ठीक से. What is I here? I is going to be the intensity of any one of the interfering waves, I1 और I2. दोनों के बदले हमने I ले लिया है, उसको हमने I बोल दिया है. तो this resultant intensity here will be either 4A square or it can also be written to be equal to 4 times of the intensity of any one of the waves. Remember. Okay. दूसरा जो टेबल है वो हमारा आएगा फेज डिफरेंस जब पाई बाय 3 बनता है. ओके, याद रखो ठीक से. व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स बिकम्स पाई बाय 3. हेलो, कौन? हाँ हाँ, ओके. हा मी तुम्हाला परत फोन करतो सर 15 मिनिटांनी लेक्चर मध्ये. यस. सो पाई बाय 3 अगर फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच में तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल will actually be equal to root of A1 square plus A2 square plus A1 A2. This can be proved by using this formula. If we just put this value of pi by 3, phi as pi by 3, then we can be able to obtain this formula as it is here. And in that case, if suppose the resultant intensity we want to find out, then it will actually be, तो IR के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा देखो ठीक से. So we can express it in terms of either A1 and A2. तो A1 A2 के फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से. It will be A1 square plus A2 square plus A1 A2, or we can also express it in terms of I1 and I2. So I1 plus I2 plus root I1 I2. Just forget about this. We can just get it at any time if you want. And in this case here, if amplitudes are equal, दोनों waves के amplitudes अगर equal है तो उस केस में यहाँ पे resultant amplitude कितना बनने वाला है? √3 times of the amplitude of any one of the waves. And in this case, if the intensities of both of the waves are equal, in that case the resultant intensity will be actually 3 times of A square, or we can also take it as 3 times of I, where I stands for intensity of any one of the waves. And in this case, what is the path difference between the two waves? What is this phase difference of pi by 3 correspond to path difference of? We have the formula delta x is equal to lambda by 2 pi.
into delta phi, correct है? So if we just put this value of delta phi here, then we can get del lambda by 2 pi into pi by 3, which comes out to be pi pi cancel, and we are left with this lambda by 6 only simply. So here it will be lambda by 6, remember. Okay, तो pi by 3 का पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब लैम्बडा बाय 6 का फेज डिफरेंस, ये याद रह सकता है ठीक से? चलो ठीक है. The third case or the third row in this table will be occupied by pi by 2 phase difference. If the two waves arrive at a point and they have a phase difference of pi by 2 radians between them, in that case the phase difference between the two waves, if we just put this pi by 2 here, then here 2 into 2 becomes 4, right? And hence we can get this as lambda by 4, and we can just put it here and get it as lambda by 4. Okay, and since the phase difference is pi by 2, so the amplitude, resultant amplitude of the wave will be a root of a1 square plus a2 square, remember. And in this same case here, the intensity of the resultant wave IR can be written to be equal to simply a1 square plus a2 square. That means the resultant intensity in this case only will actually be the sum of the intensities of two individual waves meeting at point. Okay, so IR is equal to I1 plus I2 is true only when the two waves mix with each other at a phase angle of pi by 2 radian, remember. And in this case, the resultant amplitude of the two waves, if their amplitudes are equal, will be root 2 times of amplitude of any one of the wave. And in this same case here, the resultant intensity here will actually be equal to the 2 times of a square, which actually happens to be 2 times of the intensity of any one of the waves here. I matlab intensity of any one of the waves. Okay, and in this next case here, if we take the phase difference between the two waves to be simply 120 degree, which is equivalent to 2 pi by 3 radian. ओके, तो अगर दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर 2 पाई बाय 3 रेडियन है, तो उस केस में मुझे बताओ ये कितना आएगा, पाथ डिफरेंस कितना आएगा? ऑब्वियसली 2 टाइम्स ऑफ दिस लैम्बडा बाय 6, मतलब ही लैम्बडा बाय 3 आएगा, करेक्ट है? सो दिस लैम्बडा बाय 3 विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, and here the amplitude, resultant amplitude will actually be equal to root of a1 square plus a2 square minus a1 a2, remember this correctly. And in this case, when the amplitudes are equal, the resultant amplitudes are not equal, the resultant intensity IR will actually be given by a1 square plus a2 square minus a1 a2 kept as it is. And in the same way here, in case when the resultant when the amplitudes are equal, the resultant intensity in this case or resultant amplitude will be same as amplitude of any one of the wave, and resultant intensity will be equal to a square, which is same as the intensity of any one of the waves here. And finally last table जो last column row जो हमारा होगा वो रहेगा phase difference between the two waves meeting at a point is going to be pi. So if it is pi, then the path difference will be lambda by 2, correct? And since path difference is lambda by 2, phase difference is pi, so the amplitudes will get subtracted from each other, and the resultant amplitude here in this case will be simply a1 minus a2. And in case when these amplitudes are not equal, the resultant intensity IR will actually be proportional to a1 minus a2 ka whole square, remember. And also that the resultant intensity resultant amplitude, in case when the two amplitudes are equal, both of the waves have equal amplitudes, so the resultant amplitude will be 0 and resultant intensity will also be 0, no doubt. So this is the whole table which we have to keep it in mind. Believe me, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल जस्ट देख के सॉल्व किए जा सकते हैं. Just if you just remember this whole table, then you can just solve the difficult questions in fraction of seconds. Okay, तो ये बहुत important short trick है इस chapter के अंदर का, and the same short trick will also work in case of the wave optics which you are going to do later. आगे चल के हमको wave optics करना है, ठीक है? wave optics के अंदर भी light का interference का concept आता है.
light का interference. Okay, whenever we talk about the interference of light, then once again we have to use the same table in that chapter also. So उस chapter के अंदर भी हमको वही table use होने वाला है. ठीक है, याद रखो ठीक से. And in general, if suppose we have the phase difference between the two waves is not amongst all these values. ये standard values के अलावा अगर कुछ भी phase difference आता है, तो we are already here the formula, general formula for this to get this resultant amplitude as well as resultant intensity. Okay, तो ये formula हमारे पास already हमारे पास है ही. ठीक है, इन जनरल अगर इनके अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू अगर आता है, तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, जिससे ही हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मिलने वाला है और इस फॉर्मूला से हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मिलने वाला है. बिल्कुल. उसमें और एक बात स्पेशल केस के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर दो वेव्स मिल रहे हैं और उन दोनों का एम्पलीट्यूड ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, but phase difference between them is not amongst all these here. So in that case, we can get the resultant amplitude to be simply by putting a1 equal to a2 equal to a here. तो यहाँ पे a1 स्क्वायर के बदले अगर हमने a डाल दिया, तो वो a स्क्वायर बन जाएगा. इधर भी वापस a2 स्क्वायर के बदले भी क्या डालना है हमको, a ही डालना है, तो उसकी वजह से वहां पे भी a स्क्वायर बन जाएगा. और यहाँ पे जबकि a1 a2 है, तो उसके बदले भी हम a डाल सकते हैं, तो जिससे हमको यहाँ पे ये 2a स्क्वायर मिल जाएगा और cos phi will be kept as it is. अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन मत करो, ये इधर का phi और इधर का d phi सेम ही है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन. वी कैन जस्ट कंसीडर देम सेम ओनली. यस, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे phi लिया है ना डायरेक्ट, और यहाँ पे जो इनिशियल फेज जो है यहाँ पे 0 है, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वही यहाँ पे phi बनने वाला है. नहीं तो अगर फर्स्ट वाले वेव का फेज अगर phi1 लिया होता और सेकंड वाले वेव का फेज अगर phi2 लिया रहता, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने थे, फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे, तो phi2 माइनस phi1 ऐसा निकालते थे. लेकिन जबकि मैंने ये phi1 को 0 ले लिया और phi2 को ही phi ले लिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये phi माइनस 0 मतलब ही phi बन गया. समझा ठीक से, तो don't get confused. So yes, now we'll see this will actually be written to be simply equal to root of a square plus a square क्या बन गया, 2a square बन गया. करेक्ट है. and this 2a square once again into cos phi, right? If we take this 2a square common, then we can just get this 1 plus cos phi inside the bracket, and 1 plus cos phi has a ready-made formula in trigonometry, which is simply 2 cos square phi by 2. So if we just replace it by that, then we can get this simplified as 2 cos square phi by 2, and this will actually be, अभी 2 into 2 क्या बनता है, 4. 4 का square root होता है 2. So here we can going to get this R, that is a resultant amplitude when the two waves of equal amplitude mix with each other with the phase difference of phi will be simply 2a cos phi by 2. It is that simple. See here. So when the two waves meet each other with the phase difference of phi with each other, then the resultant amplitude, if they have equal amplitudes, then resultant amplitude will be given by this formula. And all these values we have obtained already here. यहाँ पे जो सब वैल्यूज हमने यहाँ पे ऑब्टेन किए कि नहीं, इस कॉलम के अंदर के ये सारे वैल्यूज इसी एक फॉर्मूला के स्पेशल केसेस है. याद रखो ठीक से, special cases. That means if we just put this phi is equal to 0 here, we can get this 2a as a correct answer. If we just put this phi as pi by 3, we can get root 3a. If we put pi by 2, then we can get this root 2a. If we put 2 pi by 3 instead of phi, we can get a. And if we put pi, then we can get 0 as a final answer. Remember, so all these values in this table are just special cases of this formula here. Remember, okay? And here, if we want to express this formula in terms of the intensity, तो intensity के लिए क्या करना पड़ेगा, square करना पड़ेगा. So let us square both sides and get this r square to be simply equal to 4a square into cos square phi by 2. Correct है. And now if we just replace the intensity of any one wave to be simply I,
बिकॉज दे आर सेम, है कि नहीं, दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सेम है। तो उसको फिर I1 I2 बोलने के बदले जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे I1 और I2 के बदले हम क्या करेंगे, I लिख देंगे उसको। तो अगर उसको हम I से रिप्लेस करेंगे जो कि a स्क्वायर के बराबर भी रहने वाला है, तो इससे और ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो एक्चुअली रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनने वाला है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हैपेंस टू बी 4I into cos square 5/2. Okay, this is the very important formula to be used for finding the resultant intensity directly, and even all these values obtained here in this last table here, ये जो पूरा टेबल दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पूरा, इस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज हमको मिलने वाले हैं वो इसी फॉर्मूला के अंदर 5 के अलग अलग वैल्यूज डालने से, ये सारे वैल्यूज जो है ना वो अगर हमने इस 5 के अंदर डाल दिए तो ये सारे वैल्यूज हमको मिलने वाले हैं। करके देखो, ठीक है। सो दिस इज द important significance of this formula here. This is formula for finding the resultant intensity, and this is the formula for finding the resultant amplitude. Remember, sometimes the ratio of amplitudes is also given. Ratio of amplitudes or ratio of intensities is also given. तो उस केस में अगर सपोज मैक्सिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस कितना होता है, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, प्रोपोर्शन में होता है, बराबर। एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन केस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न और इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स हैपेंस टू बी प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्रॉस चेक हियर। ओके, ये जो हमने अभी देखा इस टेबल के अंदर, तो ये सारे जो वैल्यूज हमको दिख रहे हैं इंटेंसिटी के या एम्पलीट्यूड के, तो इन सारे वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम कौन है, या चलो इन सारे वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम कौन है, जरूर a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर है, उसको ही हमने क्या बोला, I मैक्स बोल दिया, करेक्ट है। और मिनिमम कौन है, ये तो है, इसको ही हमने I मिनिमम बोल दिया, चलेगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखो ठीक से, if we call this I max to be simply a1 plus a2 the whole square, and I min is denoted by a1 minus a2 the whole square, then the ratio of I max to I min can be obtained to be simply equal to the a1 plus a2 का whole square upon a1 minus a2 का whole square, which can also be written as I max to I min is actually going to be a1 plus a2 upon a1 minus a2 the whole square. Okay, so this is also one of the important formula. बट अभी इसमें देखो a1 और a2 कभी दिया हुआ हो सकते हैं कि a1 is equal to 4 सेंटीमीटर एंड a2 is equal to 3 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हो सकता है, नो डाउट। या कभी कभी क्या करते हैं, a1 और a2 का रेशियो दे देते हैं। इफ सपोज a1 अपॉन a2 is given, अभी a1 और a2 का रेशियो कैसे दे सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव इज जस्ट डबल ऑफ द अदर, और ऐसा बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वन वेव इज जस्ट ट्रिपल ऑफ द अदर, लाइक दैट। सो और रेशियो के फॉर्म में भी दे सकते हैं, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स ऑफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स is going to be 5:4 simply. So in that case we can consider this 5:4 as r here, and if you want to express this formula completely in terms of r, then in that case we can just divide this whole formula by a2 here, every term divided by a2, and then a1 upon a2 will become r, and hence we can say that this ratio of maximum to minimum intensity in case of interference of two waves having ratio of amplitudes r will be actually r plus 1 upon r minus 1 the whole square, remember. Okay, and amplitudes जो है दो waves के जो amplitudes है उनका रेशियो अगर दिया है तो फिर यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से। यस, रिमेंबर दिस करेक्टली। कभी कभी क्या करते हैं कि दो वेव्स जो है इंडिविजुअल वेव्स उनके इंटेंसिटी का रेशियो देते हैं, ठीक है। अगर वो रेशियो दिया हुआ है 25:9, we should understand that intensity is proportional to the amplitude square. So since the ratio of intensities of two waves is given, that means ratio of amplitude square is given, मतलब a1 square upon a2 square का वैल्यू दिया हुआ है 25:9 फॉर एग्जांपल।
So if we just take the square root on both sides here in this case, then we can be able to find out this a1 upon a2. And if we take the square root, then we can get this pi by 3, and this pi by 3 is our r. तो ये r हमारा है. समझा ठीक से? r मतलब क्या होता है? It is going to be the ratio of amplitudes. Remember, not the ratio of intensities. If the ratio of intensities is given, then we have to understand that the ratio of amplitudes will be actually the square root of ratio of intensities of two individual waves in this way here. Remember, okay? So in that case, we can find out the ratio of maximum to minimum intensity in case of the interference pattern or interference of two waves. Yes. So this is going to be about the interference of two waves in general. Okay, तो ये सारी चीजें जो है वो याद करके रखो. तो कल के लेक्चर में हम बीट्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, बीट्स, फिनोमेना ऑफ बीट्स, एंड इवन इस बीट्स के अंदर हमको डॉपलर इफेक्ट भी लगने वाला है, जबकि वो 11th स्टैंडर्ड में आपको था. वो भी हमको यूज करने वाला पढ़ने वाला है, बिकॉज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड in such a way that you should use the Doppler effect also in that case. So उसके लिए आपको Doppler effect भी रिवाइज करके रखना है. भले हम करेंगे ही रिवाइज कल के लेक्चर में, बट फिर भी आपको एक बार रिवाइज करके आना है Doppler effect जो 11th स्टैंडर्ड में था. ओके, चलो ठीक है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. We'll stop here.